Good morning, children. Welcome you all to history class. Today we will start chapter 9 of history. The name of the chapter is Between the Two World Wars, Nazism in Germany and World War II. The First World War starts in 1914 and ends in 11th November 1918. The First World War affected the economies of most European countries, but their efforts to recover were constrained by Great Depression. Soldiers were placed above the civilians. The truth was that the soldiers lived a miserable lives in trenches. The small property owners suffered from the huge losses and their condition almost became weak. This leads to a great cause. Politicians were asking them to raise their voice. Then the liberal democracy opposed a dictatorship and favored an elected constitutional government in which the elected representatives were answerable to the people. उन लोगों ने डिक्टेटरशिप का अपोज किया और डेमोक्रेसी का फेवर लिया जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल होगा सारी चीज़ों का और वही आंसरेबल भी होगा. The Bengal famine of 1943 was a major famine of the Bengal province in British India during World War II. The most hazardous consequence of the scarcity was the Bengal famine of 1943, in which 30 lakh people died of starvation or perished in epidemics. Meaning of starvation is भुखमरी and epidemics means महामारी. जो बहुत ज़्यादा हजार्डस रिजल्ट था स्कैरसिटी का कमी का वो था बंगाल फैमिन 1943 की जिसमें 30 लाख पीपल मर गए स्टारवेशन भुखमरी से और पेरिश्ड इन एपिडेमिक्स महामारी से. द फैमिन डिड नॉट अकर बिकॉज ऑफ लो हार्वेस्ट ऑफ ग्रेन बट बिकॉज द ग्रेन वॉज bought in large quantities by the government for army leading to scarcity in the market. और ये अकाल इसलिए नहीं था कि फसल कम उग रही थी हार्वेस्टिंग कम था बल्कि इसलिए था कि जो ग्रेन्स थी वो गवर्नमेंट आर्मी के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेती थी तो मार्केट में ग्रेन्स की कमी आ गई थी. रीजन्स फॉर बॉम्बिंग इन हिरोशिमा एंड नागासाकी. हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब क्यों फेंके गए ये देखेंगे. During the phase of the war, Britain and USA fought together to liberate France, after which they advanced to Berlin. The USA then dropped atomic bombs on two Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki after Berlin was captured to force to surrender, which it immediately did. वॉर में ब्रिटेन और यूएसए एक साथ फाइट की फ्रांस को लिबरेट करने के लिए आज़ाद करने के लिए तो इसलिए यूएसए ने बॉम्ब डाली जापानीज सिटीज़ में इसका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी. फैसिज्म. Fascist movement was started by Benito Mussolini, former journalist. Mussolini was a socialist until he was expelled from the party for supporting Italian intervention in World War. Mussolini was the fascist dictator of Italy. Fascist dictatorship believed in non-violence and the use of force to eliminate other political parties and organisms.
In Italy, the fascist party became active after 1919 under the leadership of Mussolini. 1919 में fascist पार्टी एक्टिव हुई मुसोलिनी की लीडरशिप में. The party gradually grew into a large and violent movement that discarded democratic methods. Fascism opposed democracy. Fascism believes that democracy, election, legal process, citizen freedom, and rights are obstacles in solving the problems of the nation. फैसिज्म जो था वो डेमोक्रेसी से के अपोज था और वो ऐसा बिलीव था, उनका विश्वास था कि डेमोक्रेसी जो है, इलेक्शन प्रोसेस जो है, वो सिटीज़न की जो आज़ादी हम देते हैं, उनको जो राइट्स देते हैं, ये सब ऑब्स्टेकल्स है, रुकावट है नेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. इट बिलीव्स दैट वन पार्टी एंड द डिक्टेटरशिप ऑफ वन लीडर. Fascists believed in traditional family and social values such as women should bear children and look after home. तो फेसिस्ट ऐसा ट्रेडिशनल फैमिली में बिलीव करते थे और वो ये सोचते थे कि औरतों को, बच्चों को और घर को देखना चाहिए. पीपल इन हायर पोजीशन इन सोसाइटी शुड बी रिस्पेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स, शुड बी ओबेड विदाउट क्वेश्चंस. They did not believe in values such as equality and equal opportunity for all, respect for diversity, tolerance, etc. उनका इक्वालिटी हो, समानता हो या सेम अपॉर्चुनिटी मिले सबको, सब चीज़ के लिए इक्वल रिस्पेक्ट हो, टॉलरेंस, इन सब में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था. The full name of Hitler is Adolf Hitler. Nazi Party came to power in Germany under the leadership of Adolf Hitler in 1934. The party had become very popular among the lower middle class between 1924 and 1934. ये पार्टी लोअर मिडिल क्लास के बीच में बहुत पॉपुलर हुई. इसके पॉपुलैरिटी के बहुत सारे रीजंस थे. फर्स्ट, द जर्मन पीपल वर एंग्री एंड अपसेट बाय ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ वर्सलेस ट्रीटी. Their self-respect was wounded, so they were looking for a leader who could revive their national pride. उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी जा चुका था, तो उनको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो फिर से उनका वो प्राइड ला सके. Second one is that the country was severely affected by the Great Depression from 1929 to 1933. End of 1938, all Jewish business had been forced to close. Nazis expelled Jews from civil service, professions and jobs and all cultural life. Jewish state was established in 1948 with the help of US government. यूएस गवर्नमेंट की हेल्प से ज्यूइश स्टेट 1948 में बना था. Jews were stripped of their citizenship in September 1935.